Take me away from home. Show me all the places. Hey lovely people, welcome back to my channel. I'm Monalisa and आज के वीडियो में ना मैं आपको बैंगलोर का सबसे लग्जूरियस मॉल घुमाने वाली हूँ. तो क्या हुआ था गाइज, आई वेंट देयर लाइक 2-3 days ago एंड आई वेंट देयर फॉर सम वर्क. मेरी कंपनी के साइड से कुछ वर्क था, दैट इज़ सेपरेट. तो मैंने सोचा मैं रिकॉर्ड करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये प्लेस कितनी ब्यूटीफुल है. लाइक ऑल इन मार्बल्स, ब्राउन कलर का मार्बल इतनी प्यारी लगती है. दिस वॉज बैंगलोर्स फर्स्ट लग्जूरियस मॉल जो कि विजय माल्या ने बनाया था बैक देन, बहुत साल हो गए. बट देन गाइज, आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू द प्लेस, how beautiful it is. So let's get right into the video. Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night, race all of these broken dreams in flight, and we'll fly. Oh, we'll fly. So I tried recording outside. गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही है. पता नहीं मेरी आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड हो रही होगी कि नहीं. बट दिस इज़ द एग्जैक्ट सेम प्लेस जहाँ पे मैं कितने साल पहले, आई थिंक 2017 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अपने मॉम डैड के साथ आई थी. आप देख सकते हो, दिस इज़ द यूबी सिटी. ये 123 मीटर्स हाई है. कर्नाटका का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है ये. Oh, we'll fly. एंड गाइस, विजय माल्या का ऑफिस भी इसी बिल्डिंग में था. बट आपको तो पता ही है विजय माल्या के बारे में, तो हवा बहुत चल रही है. बट आई एम फीलिंग सो गुड सिटिंग हियर कि मुझे अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा है. क्या करूँ गाइस, अगर मैं ऐसे व्लॉग करती तो आपको कैसा लगता बताओ. मास्क के साथ पूरा घुमाती मॉल के अंदर, क्या क्या शॉप्स है, तो आपको कैसा लगता है चलिए बताइए नीचे कमेंट में. तो आई थॉट आई इंट्रोड्यूस द प्लेस लाइक दिस. वैसे भी मेरा मकसद तो आपको घुमाना है ना, तो ऐसे ही सही. वहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा थिएटर है बाहर निकल के. I don't wanna say anything, 'cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. So I'll keep my shoes on and not leaving. We're on thin ice, winter season. Can't wait for a single reason not to say goodbye. एंड बिसाइड द थिएटर इज दिस प्लेस जहाँ पे फाउंटेन्स लगे होते हैं. तो नॉर्मली दीज फाउंटेन्स आर वर्किंग एंड देन आप बीच बीच में से निकल के इस फाउंटेन का मज़ा ले सकते हैं. गाइज, इस मॉल में ना इतने लग्जूरियस ब्रांड्स मिलते हैं. आपको लुई विटॉन मिल जाएगा, गुची मिल जाएगा, बर्बरी मिल जाएगा. जितने भी हाई एंड ब्रांड्स होते हैं ना, आपको सब मिल जाएंगे. तो
शॉपिंग तो यहाँ लोग कम ही करते होंगे बिकॉज आई कुडंट सी इवन वन गेस्ट बाइंग लुई विटॉन या कुछ भी इतना हाई फाई ब्रांड, बट मैंगो इज़ द वन ब्रांड जो यहाँ पे बहुत चलता है. मैंगो तो सभी का फेवरेट होता है सपोज. फूड कोर्ट का जो एरिया है दैट इज सेपरेट, लाइक इन फूड सेक्शन सेपरेट ही रखा था फ्रॉम द प्लेसेस वेर यू कैन गो एंड शॉप. अगर आप शॉपिंग करते करते थक जाए तो यहाँ पर फूड कोर्ट भी है. तो जैसे आप एंटर करते हो यू हैव दिस टॉल एस्केलेटर्स. जस्ट फील द वाइब ऑफ द प्लेस. इतना मज़ा आता है ना, मतलब हवा चलती रहती है, म्यूज़िक चल रहा है, यू गेट अ वेरी गुड फील. कभी शाम में जाकर के बैठिए, बहुत ही मज़ा आएगा. ईजीली आपके 2-3 घंटे वहाँ पर ऐसे ही बैठे बैठे कट जाएंगे. ब्रांडेड शॉप्स जहाँ पर आप सिर्फ विंडो शॉपिंग करेंगे, वी हैव पार्लर्स ऑल्सो हियर. तो वहाँ पर आप जाकर के आप देखिए. I did not have much of time because I went there for some work, so I just look around. वहाँ पे मुझे एक प्रोडक्ट पसंद आया, so I thought like let's buy this and try it out. So this is what I purchased. So guys, this mall is divided actually in 3-4 parts. तो अगर आप राइट सेक्शन में चले जाते हो, जैसे ही एंटर करते हो, यू विल फाइंड दिस ब्यूटिफुल आर्ट जो कि पूरे वॉल्स में कर रखी है. लाइक द मार्बल यूज, द डिजाइंस देयर इज सो एस्थेटिक. आपको देख करके इतना अच्छा लगेगा. एंड देन व्हेन यू स्लोली लुक अप, यू विल हैव दिस पैटर्न ऑफ ब्लू कलर जो कि एक फील देता है कि डायरेक्टली आप स्काई के नीचे शॉपिंग कर रहे हो. So guys, this was my cute short trip and I made a video for you guys. अगर आप बैंगलोर से हैं तो प्लीज इस प्लेस को विजिट जरूर करिए. माय रिकमेंडेशन, आपके पेरेंट्स आते हैं तो प्लीज शो दिस प्लेस बिकॉज इट इज लग्जरी. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रिकमेंडेड go subscribe to the channel. I'll end the vlog here only guys. It was nice meeting you. Happy Sunday. Thank you for watching. Bye. Guys, Rajdhani Thali here. Can you imagine going to UB City and trying a thali there?